वहाँ से कुछ नहीं, वहाँ से कुछ नहीं, इसमें लेना, इसमें लेना, इसमें लेना। मुझे तो बैग में कोई नहीं। A very good afternoon to all the visitors. Welcome to the National Science Center and welcome to the special show of National Science Center, that is SOS. That stands for what? Science ऑफ स्फीयर नहीं है, साइंस ऑन स्फीयर है। साइंस ऑन स्फीयर क्यों? क्योंकि सेंटर में आप जो स्फीयर देख रहे हैं इसके ऊपर हम साइंस से रिलेटेड फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपने जो वीडियो देखा इसमें क्या क्या आपको लगा, क्या बताया गया है उस वीडियो में? Changing the condition of the Yes, the many challenges that are associated with the earth. हाँ, बहुत सारे challenges हम फेस कर रहे हैं। Changing climate, changing ice and snow, changing atmosphere, changing land, सब चीज चेंज हो रही है। हाँ, and the main reason is what? Population is a reason.
Population and industrialization. Population and industrialization. Okay, we will discuss it later on. Firstly, यहाँ पे आप जो स्फीयर देख रहे हैं इसका डायमीटर 6 फीट है, 6 फीट इसका डायमीटर है और अपने आसपास आप देख रहे हैं 4 हाई रेजोल्यूशन प्रोजेक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से इस पे प्रोजेक्शन किया गया है और इस पे जो स्लाइड में जो भी प्ले करूंगी एक्चुअल में वो मूव कर रही है। ये जो स्फीयर है स्टेशनरी है, जो भी इस पे जो रोटेट हो रहा है ये स्लाइड है, प्रोजेक्शन है और ये जो स्फीयर है 3 स्ट्रिंग्स की हेल्प से इसको सस्पेंड किया गया है। आप ऊपर देख सकते हैं 3 स्ट्रिंग्स हैं जिससे स्फीयर को सस्पेंड किया गया है। Are the strings visible? Yes. Okay. So starting with my first slide. Here's a beautiful surface view of Earth. So we are discussing environmental issues, the climate change. क्या होता है climate change? Climate change. Increase or decrease in temperature. Increase or decrease in temperature means fluctuation हो रहा है. Yes. Okay. क्या जनरली कॉमन टर्म हम यूज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग सभी ने सुना है. क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब क्या होता है, क्या फैक्टर्स हैं इसके पीछे, क्यों हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग? Increase of carbon dioxide in the atmosphere. Increase of carbon dioxide gas, Also population, increase of CFC. increase of CFC, chlorofluorocarbons, 97% water vapors. 97% water vapors. Only 2-3% carbon dioxide monoxide, gases. Okay. But main factor is Deforestation. this water vapors. Main factor is water vapors. Okay. Deforestation. डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं और फॉसिल फ्यूल की बर्निंग्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओके, मेजर कॉज जैसे माना जाता है इंक्रीज इन लेवल ऑफ CO2, एम आई राइट? Yes. हाँ, वाटर वेपर्स इतना कंसिडर नहीं किया जाता। 97% of water vapors. ओके सर, नो प्रॉब्लम। CO2 का लेवल क्यों इंक्रीज हो रहा है? Because of industry. वही रीजन है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग्स है और ह्यूमन एक्टिविटीज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अच्छा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं इसके? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, Ozone depletion. ओजोन डिप्लीशन। हाँ, लेकिन रिसेंट स्टडीज क्या है वो रिकवर हो रहा है, ओजोन लेयर जो है वो रिकवर हो रहा है। हाँ जी, तो क्लाइमेट चेंज पे एक वीडियो है, आप वो देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक हीट ट्रैपिंग गैस है, हीट ट्रैपिंग गैस है और इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है? हाँ, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं गुड। और यस, ग्रीन हाउस क्या होता है? एक ग्लास हाउस होता है, ऐसा ग्लास होता है जिसमें जो सनलाइट अंदर आ जाती है ना वो वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है, वो बाहर नहीं जाती है। तो वही सेम काम जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है, जो भी सन की रेडिएशन आती है उसको ट्रैप कर लेती है और वापस नहीं जाने देती है। अर्थ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो हीट ट्रैप करेगी, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब एनुअली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो देयर इज अ वीडियो ऑफ क्लाइमेट चेंज। In this view of Earth, we see carbon dioxide being absorbed through the seasons. The darker the green, the higher the concentration of CO2. When plants on land and phytoplankton in the ocean grow, they take in the CO2 and release oxygen. This process is called photosynthesis. When these carbon-rich plankton and plants die, they are buried deep in the ground and in the bottom of the ocean, taking CO2 with them. Over time,
transformed modern life. In this view, yellow is for urban areas, red is for roads, blue is for shipping lanes, and green for air corridors. We rely on fossil fuels for nearly everything, from transportation to building to food production. Every time we burn these fossil fuels, we take carbon out of the ground and put it into the atmosphere. Our energy use is radically tipping the carbon balance. Data spanning the last 400,000 years show that carbon dioxide levels have fluctuated. But during that time, CO2 always remained below 300 parts per million. In the 1950s, CO2 levels started skyrocketing, and they will soar even higher if we continue business as usual. This rapid increase in CO2 is dramatically changing Earth's climate and ocean. We are ill prepared for the consequences. Increased CO2 is changing the ocean's chemistry. Data collected from ships crisscrossing the globe indicate the ocean is becoming more acidic. Ocean acidification is beginning to dissolve the shells of many creatures, including those at the base of the ocean's food webs. The effects will ripple through our fishing communities to the billions of people that rely on food from the ocean for their survival. More CO2 in the atmosphere increases Earth's temperature. In this data set, the darker the red, the greater the change in average temperature since 1940. CO2 is a heat-trapping gas that acts like a greenhouse, keeping the air inside warm and moist. Warmer global temperature threatens plant and animal life. Blooming and migration cycles are changing. Coral bleaching events are becoming a common occurrence, destroying coral reefs around the world. Diseases that flourish in warmer weather are spreading. Warmer global temperature fuels more powerful storms, hurricanes, typhoons, and blizzards. It also makes sea level rise, greatly increasing the damage caused by storm surges. More extreme weather, both flooding and droughts, are becoming commonplace. Habitats are changing for all species, including people. In the Arctic, sea ice is melting, permafrost is thawing. Entire villages are being destroyed by coastal erosion. Arctic cultures that have been here for thousands of years face a precarious future, as do we all. But we can confront that future by taking a look at the past. 40 years ago, our use of certain manufactured chemicals was destroying the protective ozone layer in Antarctica. The global community came together to face this complex threat. Nations agreed to ban these chemicals, and today ozone depletion has slowed. The ozone layer is expected to recover. Together we can confront the carbon crisis. We have changed the Earth's climate and ocean by our actions, yet our actions can stem the tide. We can make right now determine Earth's future climate. It's not too late. So this is all about climate change. Now, ये जो इमेज है इसे ब्लू मार्बल कहते हैं. ब्लू मार्बल कहा गया या ब्लू प्लैनेट कहा गया. Why blue planet? 70% of the area is of ocean. Yes, it's 71%. 71% of Earth's surface is covered with water, and rest 29 is Land mass. rest 29 is Land grasslands है, land है. Okay. Out of 71%, how much is available for human use? 1%. Yes, it is 1% or approximately less than 1%. बहुत कम है. बहुत कम
परसेंटेज है अवेलेबल। क्यों इतना कम क्यों? Because of mountains, forests. Best waters are of salt water. एग्जैक्टली सारा पानी जो है कैसा है? ओशनिक वाटर है, सॉल्टी है। हाँ, इसीलिए वो कंज्यूम में नहीं ले सकते हैं। जो सॉल्टी वाटर है वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, बहुत कम अमाउंट है। ओके, इस पे एक वीडियो है ब्लू प्लैनेट के ऊपर जिसमें वाटर के बारे में बताया गया है, उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है और उसमें ये बताया गया है कि कितना परसेंट अवेलेबल है फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग के लिए और कैसे हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। Water defines our world, from shaping the surface of the planet to supporting all life on Earth. Water in abundance makes Earth remarkably different from its neighbors in the solar system. Mars is a frozen desert. Venus is hot and dry. The moon is both cold and hot, and waterless. And then there is Earth, often called the blue planet, because from space we see that most of our planet's surface, nearly 71%, is covered in water. From out here, Earth's blue, watery surface appears calm and still. But Earth's water is constantly moving in a complex and unending cycle, shifting between solid, liquid, and vapor, moving between Earth's sky, its surface, and the ground beneath our feet. Water is on the move in the atmosphere. Water vapor, usually invisible but colored gray in this animation, moves heat from the equator toward the poles. Where warm, moist air rises to meet cold air, swirling white clouds form. Water vapor transforms itself into droplets or icy crystals and falls to Earth as rain or snow, supporting life on the continents and sculpting landscapes as it moves across Earth's surface. In this 12-month sequence, snow cover comes and goes. Tropical areas green up, then turn brown as precipitation changes with the seasons. And water is on the move in the world's oceans. Currents of water, like huge ocean rivers, move around the globe. Warm tropical waters, shaded red in this animation, run towards the poles. Cold polar waters, here shaded blue, return to the tropics. Endlessly cycling, these currents help regulate Earth's climate. Even deep beneath Earth's surface, water is on the move. There may be many times as much water locked up in the minerals that make up Earth's mantle as there is in all the world's oceans. The water-bearing minerals of Earth's mantle make rock more elastic under heat and pressure, making possible the movement of continents across the surface of the Earth, causing volcanoes, earthquakes, and the rise of new mountain ranges. Earth has a vast amount of water, but only a small fraction is suitable for human use. What we drink and bathe in, what we use to grow food, what we depend on for life is fresh water. Fresh water sustains all life outside the oceans, and there is surprisingly little of it. Just how much of Earth's water is fresh water? The squares that you now see covering the sphere represent all the water in and on Earth. The oceans hold 97% of Earth's water. This water is too salty for our needs. Let's remove the ocean water. The remaining 3% is fresh water. But 2/3 of that is locked up in glaciers, ice caps, permafrost, and deep underground. It's fresh water, but we can't easily get to it. When we remove the squares that represent inaccessible fresh water, we are left with this slender ring of blue. Less than 1% of Earth's water supports all life outside of the oceans.
and that is not evenly distributed across the planet. The highlighting on this map points to places in the world where freshwater supplies are inadequate for the human population living there. Frequent water shortages in these areas affect not just people, but numerous species of plants and animals that need fresh water to live. Human demands on water, a precious and limited resource, are growing. Experts predict that by 2025, over 2.4 billion people will live without adequate supplies of fresh water. Most of the demand for fresh water isn't directly from our homes, but from industry and agriculture. This map shows where crops are raised around the world. The darker the color, the more land is devoted to producing crops. Agriculture represents the largest share of human freshwater use, an astounding 70%. This animation shows how Earth's human population has grown over 200 years, from nearly 1 billion people in 1800 to over 6.5 billion people today. At night, city lights pinpoint our densest population centers. With so many people on Earth, collective choices about how we use our water do have global impact. The human impact on Earth's water is greater than from any other form of life. Water is the foundation for life, not just ours, but all life on Earth. We can choose to protect our water so that generations to come may also appreciate the magnificence of our water planet. Question. What house कहते हैं? So it is a nuclear powerhouse. क्यों nuclear powerhouse क्यों है? हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम से nuclear powerhouse है. हाँ? फ्यूजन होता है, that's why. Helium और हाइड्रोजन तो इसके components हैं जिससे stars बनते हैं. They keep on reacting in reaction Fusion होता of है. nucleuses of hydrogen will form helium and then that is the source of energy. Yes. वो किस part में होता है? कोर, yes, सही कोर में होता है. ओके. सन का जो आउटरमोस्ट लेयर होता है उसे कहते हैं फोटोस्फीयर, जहाँ से लाइट एमिट होती है. फोटोस्फीयर का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस. यस. एंड द इनरमोस्ट लेयर इज कोर. कोर का टेम्परेचर कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. और एज कंपेयर टू फोटोस्फीयर बहुत ज्यादा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. कोर में कौन सी होती है? फ्यूजन रिएक्शन होता है. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है जो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं कंबाइन करके हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं और उस रिएक्शन से बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है. तो इसीलिए टेम्परेचर ज्यादा है. ओके, वन मोर स्लाइड नाउ. Identify please. Moon. Moon. This is the slide of moon. Moon is what? Natural satellite of Earth. So आप देख सकते हैं इसकी सरफेस पे क्रेटर्स, डार्क स्पॉट्स देख सकते हैं. ओके. इस सैटेलाइट का क्या नाम है? इस सैटेलाइट का क्या नाम है? Moon है. If I say Jupiter has 67 moons, what does moon refers to? Moon refers to natural satellite. Normally कहा जाता है, लेकिन हर सैटेलाइट का एक नाम होता है. इस सैटेलाइट का नाम है लूनार. अर्थ की जो सैटेलाइट है मून, उसका नाम है लूनार. लूनार से ही क्या एग्जिस्ट हुआ वर्ड? लूनर एक्लिप्स. हाँ, लूनर एक्लिप्स क्या होता है? चंद्रग्रहण सबने सुना है वर्ड लूनर एक्लिप्स. लूनार से ही आया है. ओके, नाउ विद द लास्ट स्लाइड. हियर आर द फेजेस ऑफ मून. हर 15 दिन में चेंज होते हैं. हाउ मेनी फेजेस आर देयर?
यूजुअली 5 फेसेस होते हैं. So this is all about Science on Square show. I hope you all have enjoyed the show. Thank you.